शोक पुष्प लेकर के यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे भी लंबे समय तक देवेंद्र राणा जी के साथ काम करने का अवसर मिला था। मृदुभाषी और पार्टी संगठन की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति हैं थे। निश्चित ही उनके जाने का नुकसान जो है वो पार्टी को बहुत बड़ा होगा। Delegation of the ruling alliance in Jharkhand on Friday called on the Chief Electoral Officer of the state and demanded that the transfers of offices from districts should be stopped. JMM General Secretary Supriyo Bhattacharya, who led the delegation, said that all the four allies of India-Alliance have raised the issue of interference by Election Commission of India on the offices of the state. He said this is hurting Dalit and SC community members, and there is also unnecessary pressure on administration. Bhattacharya said they have been alleging from the beginning that EC and BJP have a bunty-bubbly alliance and they are planning to loot this state. A detailed memorandum has also been submitted. अभी इस विषय में और 4:30 बजे और भी विस्तृत बोलेंगे। अभी जो संक्षिप्त विषय है कि यहाँ हम थे, हमारे जो इंडिया गठबंधन के चारों घटक दल हैं, हमने कहा है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग का हस्तक्षेप राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों पर हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि यहाँ जो पदस्थापित दलित और आदिवासी जो समाज के लोग हैं वो भी आहत हो रहे हैं और प्रशासन पर भी एक गैर जरूरी एक दबाव बन रहा है। बिना कारण बताए आप डीसी हटा दे रहे हैं, आप एसपी हटा दे रहे हैं, तो एसपी डीसी हटा रहे तो फिर राज्य सरकार से मांगते हैं कि आप नाम दीजिए। ये तरीका सही नहीं है। जो शुरू से हम लोग आरोप लगाते रहे कि ईसी और बीजेपी का बंटी बबली का जो गठबंधन है इस राज्य को कॉर्पोरेट के लिए लूटने का जो प्लान बना रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर हम लोगों का आज ज्ञापन था। विस्तृत 4:30 बजे बताएंगे। बरहेट में हेमंत जी के नॉमिनेशन को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सारे जितने राजनीतिक तौर पे बेवकूफ लोग हैं वही ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजकुमार जादूगर राजकुमार है। चलिए We'll be right back after a short break. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने जॉय राइड। एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, स्कूटर ले एक्टिवा, स्कूटर बोले तो एक्टिवा। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं।
Welcome back after the break. Let's have a look at more news. Haryana Chief Minister Nayaab Singh Saini on Friday attended a felicitation program for newly elected MLAs under Sonitpur Lok Sabha constituency in Haryana. The Chief Minister, speaking to media persons, said that his government, under the leadership of the Prime Minister, will develop Haryana rapidly. He assured that his government will fulfill the promises made in Sankalp Patra. दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भगवान विश्वकर्मा जी का दिवस है, मैं उसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज आने वाले समय के अंदर भैया दूज का भी पर्व है और गोपाष्टमी का भी पर्व है, इसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज गोहाना में कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमारे सोनीपत लोकसभा में यहाँ से नवनियुक्त विधायक चुने गए थे, उनका सम्मान समारोह कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया था। मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सभी लोगों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दे करके कमल का फूल खिलाने का काम किया है, मैं सभी को प्रणाम भी करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार, ये कमिटमेंट है सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार हरियाणा की सरकार बनी है, तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करने का काम ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के करेगी। हरियाणा की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी सरकार लगातार पूरा उतर रही है। आगे भी इस तीसरे टेन्योर के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में बातें कही हैं, उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। हरियाणा दिवस है सर, आज कुछ नया। Haryana Chief Minister Nayaab Singh Saini also extended greetings to the people of the state on the state's 59th Foundation Day. Let's hear his message. हरियाणावासी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। यह पर्वों और त्योहारों का मौसम है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज के पावन पर्व की मेरी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। An incident of stubble burning was reported in a field in the Farwai Kalan village under Sirsa district of Haryana. The issue of stubble burning has been a topic of debate, especially in the state. However, it is a different story for farmers. A farm leader, Lakhwinder Aulak, said that it is the compulsion of the farmer to burn the stubble. The small farmers do not have required machines, and the farmers have to wait for 5 to 7 days to sell the paddy in the mandis. He said the government needs to provide good facilities and equipments to the farmers. किसानों द्वारा पराली जलाई जा रही है। दिल्ली के में ये माना जा रहा है कि जो पराली हरियाणा पंजाब में जलती है, उसका धुआं दिल्ली पहुंचता है। देखिए, सबसे पहले जब मजबूरी होती है किसान की, और मजबूरी क्या है, जो छोटा किसान है, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला 5 एकड़ तक का किसान है, उसके पास जो ट्रैक्टर है, जो साधन है, वो छोटा है, 35-40 हार्स पावर का है। तो जो इम्प्लीमेंट है, चाहे उसको कोई भी चीज उसने लगानी है, सुपर सीडर चाहिए, वो 60 हार्स पावर से ऊपर चाहिए, चाहे रिपर है, चाहे बेलर की बात करें, गांठ बनाने वाला, वो भी छोटे किसान के पास मिलता नहीं है जल्दी से, और उससे भी बड़ी मुसीबत आज के समय में धान बेचने के लिए मंडियों में 5-5 7-7 दिन रुलना पड़ रहा है। डीएपी लेने के लिए एक अगर घर के 3 सदस्य हैं तो तीनों ही एक डीएपी की लाइन में लगा हुआ है, बजाई के लिए डीएपी लेनी है, दूसरा धान बेचने के लिए मंडी में है, तीसरा ये काम धंधे में लगा हुआ है। तो ये किसान की मजबूरी है। और दूसरा नंबर, एनजीटी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पराली का धुएं सिर्फ 6% है, बाकी 94% धुआं, जिसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्री का है और व्हीकल का है, उसको धुआं नहीं मानते हैं। तो हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार के को आपके चैनल के माध्यम से,
भी जब आग लगाता है सबसे पहले धुएं की चपेट में आग लगाने वाला आता है, तो उसकी कितनी बड़ी मजबूरी होगी कि उसको खेत में पराली को जलाना पड़ रहा है। अगर पराली को जलाने से रोकना है तो ये लॉलीपॉप जो 1000 रुपए प्रति एकड़ का दिया है उसको छोड़कर उसको साधन मुहैया कराने पड़ेंगे। गांव-गांव पर गवर्नमेंट को वो साधन छोड़ने पड़ेंगे जो छोटे किसान को तुरंत प्रभाव से उसके पास मिल सके, क्योंकि समय बहुत कम है। जो गेहूं की बजाई है वो 15 नवंबर से पहले पहले करनी है, तो उससे पहले पहले किसान क्या काम करेगा। ये किसान की मजबूरी है। किसी का दिल नहीं करता है भी खुद अपने बच्चों को धुएं में रखे या धुएं में जलाए, लेकिन फिर से कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया है, एनजी टीम ने क्लियर किया है भी ये धुआं पराली का नहीं है। ये जब मौसम का बदलाव होता है, हवा के कण बाहर होने की वजह से ये धुआं आता है, इसमें किसान का कोई कसूर नहीं है। Two men belonging to Pumai Naga were reportedly assaulted and robbed at Lamsang in Imphal on 31st October. Condemning the incident, the Pumai Naga Union in a statement said that the brutal act was committed allegedly by the Arambai Tengol Unit 18 personnel. The victims were identified as V. Hrangau, Blesson of Kodam Kulen village and Dalau of Lihai Kulen village. The two were reportedly returning from Thoubal after buying some livestock when they were detained by the group and were brutally tortured and robbed of rupees 30,000. Later, they were taken to Phumlo ground with rupees 31,400 were additionally seized from them. The union said that despite the victims producing their identification proofs, they were threatened with automatic weapons. Meanwhile, the Pumai Naga Women Union also condemned the incident and said that the cruel attack carried out by members of Arambai Tengol 80 Unit 18 at Lamshang, Imphal, has pierced the heart of the community, wounding the very essence of our identity and dignity as mothers. The unions have called upon the Manipur government to take immediate and uncompromised action to bring the perpetrators to justice, failing which the Pumai Naga Union will be compelled to mobilize democratic actions. Time for a short break. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारों संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ लाइफ माने एंजॉय राइड एक्टिवा 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 स्कूटर ले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा। Welcome back after the break. Let's have a look at more news. The chief of Jan Suraj Party, Prashant Kishore, on Friday stated that implementing uniform civil code in the country cannot be possible without taking the Muslim population into confidence. He said that the Muslim, which is 20% of the country's population, should be taken into confidence to make changes in the law. He also cited the example of CAA, NRC, against which there were protests across the country. Mention may be made that Prime Minister Narendra Modi on Thursday announced that UCC will be cleared by the Union Cabinet soon. It may also be mentioned that the All India Muslim Personal Law Board in August has stated that a uniform or secular civil code is not acceptable to Muslims as they will never compromise with Sharia law. यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं, ये इतना बड़ा मुद्दा रहा है कि जब तक समाज का एक बड़ा वर्ग जो मुस्लिम समाज है, जो बिहार देश की आबादी का 20% है, उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप इस तरह की आमूल चूल परिवर्तन कानून में नहीं ला सकते। हम लोगों ने देखा CA NRC में क्या हुआ। पूरे देश में
आंदोलन शुरू हो गया। तो सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, कानून आप जो भी बनाते हैं, उस कानून से जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जब तक आप उनको विश्वास में नहीं लीजिएगा तब तक आप उस कानून को लागू नहीं करा पाएंगे। देखिए, जैसे किसानों के लिए को लेकर कानून बनाए गए, फार्म लॉ बनाए गए, उसमें तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, लेकिन जब किसानों को विश्वास में लिए बगैर सरकार ने कानून बना दिया तो क्या हुआ नतीजा? अंततः सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। तो कॉमन सिविल कोड हो या कोई दूसरा कानून हो, जब तक उस कानून से इफेक्ट होने वाले समाज के वर्गों को पूरा विश्वास में नहीं लिया जाएगा, तब तक आप उस कानून को ना लागू कर पाएंगे, ना बना पाएंगे, ना लागू कर पाएंगे। अगर बना भी दिया तो लागू नहीं कर पाएंगे। और लोकतंत्र की यही ताकत है। और लोकतंत्र में आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि जब आप कानून बनाते हैं तो सारे वो उन वर्गों को, सारे उन व्यक्तियों को, सारे उन समूहों को विश्वास में लें जो उस कानून से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो सकता है। Ahead of the upcoming presidential elections, former US President Donald Trump vowed to safeguard the interests of Hindu Americans, protecting them from the anti-religion agenda of the radical left. In a bid to strengthen ties with India, Trump also expressed his desire to boost partnership with Prime Minister Narendra Modi, whom he referred to as a good friend. Sharing a post on X, Trump wrote that they will also protect Hindu Americans against the anti-religion agenda of the radical left. They will fight for the Hindus' freedom. Under his administration, they will also strengthen their great partnership with India and his good friend, Prime Minister Modi. The former president also condemned the violence against the Hindus and other minority groups in Bangladesh after the resignation of former Prime Minister Sheikh Hasina. Trump strongly condemned the barbaric violence against Hindus, Christians and other minorities who are getting attacked and looted by mobs in Bangladesh, which remains in a total state of chaos. Notably, Sheikh Hasina resigned from her post of Prime Minister on August 5 and fled to India in a military aircraft, following mounting protests against the contentious government job quota system that had sparked widespread anti-government demonstrations. Following Hasina's resignation, a caretaker government was formed in Bangladesh led by Nobel laureate Muhammad Yunus. India and Albania held bilateral consultations in Tirana on October 31st. The Indian side was led by Arun Kumar Sahu, Additional Secretary of External Affairs. The Albanian side was led by Endrit Yezraj, Deputy Minister for Europe and Foreign Affairs of Albania. In a post on X, the Ministry of External Affairs said both sides discussed the entire spectrum of bilateral relations and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. India opened its resident mission in Albania in August 2024. During the consultations, both sides undertook a comprehensive review of bilateral regional and international issues. Bilateral discussions included political relations, trade, cultural relations and people-to-people contacts. Discussions also covered cooperation between the two countries in the international arena. Both sides also exchanged views on regional and global issues of mutual interest. The Additional Secretary also met with Olta Manjani, Albania's Deputy Minister of Economy, Culture and Innovation. During the meeting, both sides discussed issues such as trade, investment, tourism and cultural exchanges and relations. India and Albania established diplomatic relations in 1956. At present, the bilateral relations between India and Albania are characterized by their positive, amicable and future-oriented nature. Additionally, both nations engage in cooperative endeavors within various multilateral forums. The bilateral trade has been seeing a rise in the last 5 years. The main trade items include petroleum products, engineering goods, drugs and pharmaceutical, iron and steel.
plastering materials, lime and cement among others. The two countries have various interactions with each other, such as cultural exchange programs, ITEC scholarship program by India for Albania, and the celebration of International Yoga Day in the country, amongst various other exchanges. The recent high-level interactions between the two countries include External Affairs Minister S. Jaishankar meeting the Albanian Foreign Minister Igli Hassani on the sidelines of the Raisina Dialogue in New Delhi on February 22, 2024, and the participation of Albana Tol, Deputy Minister of Education and Sports of Albania, in the Voice of Global South Summit held on November 14 in 2023. That is all we have for now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV. College bullet.